Good morning, my little ones. How are you all? Hope you all are safe and healthy. I am your Ami ma'am. Children, can you just tell me in which country do we live in? Yes, we live in India. India is our country. बच्चों, हम कौन से देश में रहते हैं? हाँ, करेक्ट. हम भारत देश में रहते हैं. We all are citizens of India. हम सब भारत के नागरिक हैं. So today our general awareness topic is our country, our flag and national symbols. But before explaining the topic, let's recite a poem. And the name of the poem is Bharat Mata. भारत माता तुम्हें प्रणाम, जीना मरना तेरे नाम, सबसे ऊंची तेरी शान, कभी न झुके तेरी आन, हम सब है तेरी संतान, रखेंगे हम तेरा मान. Our national flag is called tricolor or tiranga. It has 3 colors in it. The top one is of saffron color or orange color. The middle one is of white color and the bottom one is of green color. In between you see a blue color wheel and it is called Ashoka Chakra. This is the map of our country, India. ये भारत का नक्शा है. This is our national flag of India. It is also called tricolor. The top color is of saffron, that is orange color. The centered one is of white color and at the bottom it is of green color. In between you can see a blue wheel and it is called Ashoka Chakra. बच्चों, ये हमारे भारत देश का झंडा है. इसे तिरंगा भी कहते हैं. इसे तिरंगा इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, केसरी, सफेद और हरा, और बीच में अशोका चक्र रहता है. Now children, today I will show you few pictures of national symbols of India. Now children, let's learn some national symbols of India. This is our national emblem of India. It is called Ashok स्तंभ. ये है अशोक स्तंभ. ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है. Now another national symbol is our national currency. Our currency of India is rupee and पैसे. नेशनल करेंसी को हिंदी में भारतीय मुद्रा कहते हैं. हमारा भारतीय मुद्रा है रुपया और पैसा. टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी है. इंडियाज नेशनल फ्रूट इज मैंगो. आम भारत का राष्ट्रीय फल है. आम को फलों का राजा भी कहते हैं. इंडियाज नेशनल बर्ड इज पिकॉक. हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है. Our national flower is lotus. कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है. Our national river is गंगा. हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा. Our national tree is banyan tree.
बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। India's national water animal is dolphin. डॉल्फिन राष्ट्रीय समुद्री जानवर है। Now it's worksheet time. Now it's time for the worksheet. In this worksheet, you have to neatly color the flag of India. In this worksheet, you can see different pictures of birds, animals, flowers, etc. So, you have to circle the national symbols of India. Now, the first one. First one is mango, then parrot, then national emblem, then apple, peacock, lotus, rose, tiger, lion. From all these pictures, you have to circle the national symbols of India. Children, hope you have understood and remembered the national symbols of India. Hope you have enjoyed this session. See you in session 2.